हम start कर रहे हैं cytoplasmic components. So we will be talking about plasma membrane first. इसके structure और function के हवाले से जो है we will talk in detail about the function. Now in this lecture you may come across with some information that you might have studied in physiology regarding action potential or something. So हमारा जो topic है that would try to explain most of the functional aspects of the plasma membrane besides its structural component. If we look at its thickness, तो common understanding के लिए, if you have a single page of any book or any notebook, उसकी thickness आपके सामने होती है. How thick is that paper? Plasma membrane is so thin that its size is around 5 to 10 nanometer. Not size, its thickness is around 5 to 10 nanometers. And to make it equal to a single page of your book, you need to have 5,000 plasma membranes stacked one above the other. So 5,000 membranes go one above the other. अगर place करेंगे, then it will become as thick as your one page of your book is. 1950 तक there was no significant progress in the finding or staining or studies of plasma membrane because of the reason no sophisticated methods were available for staining and observation of the plasma membrane. However, after 1950s, when staining techniques were established, and then there was a possibility to stain and observe the plasma membrane for the first time. Before that, okay, the first staining revealed this picture you can see here, and the electron micrograph of the very first stained plasma membrane gave us some trilaminar appearance. That means the scientists thought that the plasma membrane is made up of three layers. One is this one, the outer one, black one. The second one is this one, the middle one, white one, and the third one is the inner one, black one. But later on, with the passage of time, the later on with the passage of time, the staining procedures, when they became more and more sophisticated, then we figured out that this is not true. It is not a trilaminar structure. अगर हम हिस्ट्री की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडीज़ के हवाले से, सो सिंस लॉन्ग लाइक 1890 से इसके बारे में जो है वो कोशिश की जा रही है टू फिगर आउट व्हाट इज़ दिस मेम्ब्रेन अबाउट. सबसे पहले जो रिपोर्ट हुई थी ओवरटोन ने 1890 में रिपोर्ट किया था दैट दिस इज़ मेड अप ऑफ लिपिड, एंड हाउ ही फिगर्ड आउट दिस फाइंडिंग, that he had idea from chemistry point of view that solutions are polar or non-polar, and for each solution there are two components, solvent and solutes. So non-polar solutes are always gets dissolved in non-polar solvents, as well as polar solutes, they get dissolved with the polar solvent. So keeping in view this information, जो है ओवरटोन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया, और वो एक्सपेरिमेंट्स मल्टीपल प्लांट्स थे, एंड देयर दोज प्लांट्स वर प्लेस्ड in different solutions through their root hairs, and then he observed that what kind of solution is taken up by those plants. अब यहाँ पे जो केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन है, केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है कि नॉन पोलर और नॉन पोलर सॉल्यूशंस जो हैं दे कैन बी डिसॉल्व्ड, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड. इस चीज़ को सामने रखते हुए व्हेन ही ऑब्जर्व्ड द एब्जॉर्बेंस बाय दीज रूट हेयर सेल्स ऑफ द प्लांट्स, and he figured out that those solutions which were of lipid in nature, and more specifically which were fatty oil in nature, they were able to enter into the cells of the plant. From this point of view, from this finding, he proposed that the plasma membrane is made up of lipid, and what kind of lipids, that remains still a question. So this was a very preliminary work, very initial work to determine what kind of biomolecules are making up the plasma membrane. Then
uh, things kept on proceeding. Garter and Grendel. In 1925, for the first time, they experimentally figured out that the lipids are arranged in bilayer formation. And how they did it? For that purpose, they did one experiment, and this is the depiction of that experiment. They took the red blood cells. अब आपको पता है कि red blood cells में plasma membrane के बाद there is no nucleus in mature red blood cell, human red blood cell. So there are no biochemical processes, and there are no lipids which come from the nuclear envelope or which come from the cytoplasm. So if we take the red blood cell और उनमें से lipids को extract करें, तो whatever lipid will come out, that will be from the cell membrane of the red blood cell. So they took out the red blood cells, they removed the lipids from the red blood cells, and then they spread those lipids over the surface of a water. अब ये एक बेसिकली जो है एक कंटेनर है. इस कंटेनर में वाटर इज फिल्ड अप विद वाटर. इसमें उन्होंने जो है लिपिड स्प्रेड किए, एंड देन दिस वन इज़ अ मूवेबल बैरियर, जिससे इसको पुश करके जो है वो इंश्योर किया गया कि लिपिड्स आर टचिंग विद ईच अदर. अगर आपने कभी घर में एक्सपेरिमेंट किया हो कि पानी के गिलास में दो कतरे आप ऑयल के डाल दें, तो ऑयल जो है दैट मेक्स अ स्पॉट. और इसी तरह अगर आप ऑयल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते, क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएं टू सच अ लेवल के टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ दैट ग्लास इज टोटली कवर्ड विद ऑयल, तो यहाँ से आप जो है आइडिया ले सकते हैं कि व्हाट इज द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द ऑयल प्रेजेंट इन दिस ग्लास ऑफ वाटर by taking the measure of the surface area of the glass. So the same principle was used by the scientists that they tried to figure out the lipid content of red blood cell, and then they figured out that the size of red blood cell, if it is 1, then the surface area or the surface area of red blood cell, if this is considered as 1, then the surface area of lipids which they isolated was 2. And from this finding, they determined that each red blood cell is covered by a lipid bilayer. That is the reason this ratio showed up in their experiment. So this was the very first time somebody proved with experiment that lipid is present in the form of bilayer. यहाँ तो क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. ये बाइलेयर वाला दोबारा बता दो. बाइलेयर का मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया है कि आपने जब रेड ब्लड सेल से लिपिड्स को आइसोलेट किया, तो लेट्स सपोज उनका जो सरफेस एरिया है वो आपने इस मेथड से डिटरमिन किया, दैट वाज 2, आगे यूनिट कोई भी लगा लें, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिए, whereas the surface area of any red blood cell was half of that surface area of the lipids. So अब एक ही सूरत हो सकती है कि अगर तो surface area of lipid was equal to surface area of red blood cells, तो हम कह सकते हैं कि जी there was a single layer of lipids around the red blood cells. अब चूंकि जो lipid content है that is twice as the surface area of the cell, so they propose that lipids are present in the form of a bilayer. अब अगर उसके बाद they further figured out the sides of the membrane, they are similar hydrophobic और hydrophilic के context में. If the membrane is lipid membrane is single layered, तो दोनों साइड्स जो हैं उस मेम्ब्रेन की दे वुड हैव बीन डिफरेंट. मींस एक एंड जो है उसका हाइड्रोफोबिक होगा, दूसरा एंड उसका हाइड्रोफिलिक होगा. लेकिन जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं तो उसके लिपिड बाइलेयर इस तरीके से अरेंज होती है कि टेल्स दे आर अरेंज्ड टुवर्ड्स द सेंटर, वेयर एज द external and internal surface of the bilayer is made up of the phosphate head. So this was the foundation for this proposal that lipid is present in the form of bilayer. Then in आपने रेड ब्लड सेल के बारे में बात की है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जी जी और उसको
उसको इन्होंने यूज किया है और आपने कहा कि मतलब उसकी जो सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होंगे सिर्फ वही होंगे, जी यानी कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियस की मतलब आगे जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होना उसके बाद आगे मतलब बनेंगी प्रोटीन, वो मतलब मैसेज करेंगे और लिपिड बनेंगे। तो न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसी वजह से वो जो मौजूद है सिर्फ वही रहेंगे। नहीं, अब रेड ब्लड सेल की एक अपनी जो है ना वो लाइफ साइकिल है। मैंने मेच्योर रेड ब्लड सेल की बात की है। अगर हम रेड ब्लड सेल के लाइफ साइकिल की बात करें तो दो किस्म की टर्म्स यूज होती हैं। एक रेड ब्लड सेल, उसको रेटिकुलोसाइट कहते हैं, दूसरा रेड ब्लड सेल उसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। रेटिकुलोसाइट डू कंटेन न्यूक्लियस, एरिथ्रोसाइट मेच्योर सेल्स हैं, दे डोंट कंटेन न्यूक्लियस। वेयर दैट न्यूक्लियस गोज, दैट इज अ क्वेश्चन। यहाँ पे जो बात हुई है, रेड ब्लड सेल का जो फंक्शन है दैट इज ओनली टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और अदर काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस उसमें नहीं होते। सो इस कंटेक्स्ट को सामने रखते हुए इन 1925 दे एज्यूम्ड कि जितना भी लिपिड मौजूद होगा वो हम एट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, बिकॉज उसमें ना तो न्यूक्लियर एनवेलप है, ना कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ना ही जो है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज जो हैं उस क्वांटिटी में मौजूद हैं। दैट वाज द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंटल सैंपल। एक्सक्यूज मी सर, इसको यूनिट में ब्रेन मॉडल भी कहते हैं ना? नहीं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है दैट इज समथिंग डिफरेंट, उसकी बात मैं अभी करता हूँ। इसके ऊपर मैंने 1925 में जो बात की है दैट इज ओनली टू डिटरमिन दैट लिपिड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एज अ बाइलेयर। उसके बाद जो मॉडल प्रपोज किए गए, तीन डिफरेंट मॉडल प्रपोज किए गए हैं। एक को सैंडविच मॉडल कहते हैं, और एक को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, और तीसरे को जो है हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। सो सैंडविच मॉडल वाज proposed by Davison and Daniel because these people they figured out that these are not only the lipids which are making up the plasma membrane। उसके लिए उन्होंने अपने जो hypothesis के लिए लॉजिक पेश की that the surface tension which an oil droplet has, that is pure oil lipids have, that is much more higher as compared to the surface tension these plasma membranes have। So this justification they gave that besides lipid there must be present something else in the plasma membranes जिसकी वजह से इसकी surface tension कम है, और इसके लिए they propose that that something else could be proteins which is present in the plasma membrane। लेकिन they were unable to prove it experimentally, that was their hypothesis, and they proposed this model that a lipid bilayer is present, and from the external side they are covered up with the protein molecule on all the sides। In 1950 they modified their hypothesis, and to support the idea that how the movement of material occur through the plasma membrane, they propose that there are some channels which are also lined up by the protein molecules in such a way that the lipids are sandwiched between these protein molecules। अब जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है that was also proposed by another scientist, उसका नाम मैं अभी देख देता हूँ। 1950 में ही वो propose किया गया था, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये था, वो मॉडल भी सेम था कि लिपिड bilayer is covered up by the layer of protein, but that model failed to explain that how the movement of material occurs। बिकॉज जब आप ये बात करते हैं ना कि लिपिड्स आर कवर्ड अप बाय प्रोटीन्स, तो वो जो मूवमेंट है थ्रू द लिपिड बाइलेयर, वो जो है उसका कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, बिकॉज नाउ द लिपिड बाइलेयर इज कवर्ड बाय द प्रोटीन। तो किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन के लिए देयर मस्ट बी प्रेजेंट सम चैनल्स, सम होल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में प्रेजेंट नहीं किए गए। सैंडविच मॉडल में 1950 में इन्हीं साइंटिस्ट ने इस चीज़ को रिवाइज किया दैट देयर आर प्रेजेंट सम pores, some holes, pores through the lipid bilayer, they are also lined up by the proteins। Then in 1972, जी, in 1972 सिंगर एंड निकोलसन proposed this fluid mosaic model, जिसकी पिक्चर आप इस साइड पे देख सकते हैं। In this model they propose that proteins they don't make up the covering out of the
outside of the lipid bilayer. Rather, they gave an idea about proteins are dispersed at random within the this lipid bilayer, and this lipid bilayer is not a static structure. Rather, this is a dynamic structure. Dynamic structure means lipid molecules can move around, can have or can show the lateral movements, not the horizontal movements. They can show the lateral movements, and proteins are dispersed among different areas of the membrane through these lipid bilayer. अब इन तीन मॉडल्स में से कौन सा मॉडल साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल है, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई, एंड दैट एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजी वाज फ्रीज फ्रैक्शनेशन मेथड. अगर आप इस पिक्चर को देखिए, हम अगर सैंडविच मेथड को लेके चलें या फिर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को लेके चलें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन फ्रीज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. And once we freeze the plasma membrane using some liquids or some gases, then we have very sharp knife which can give us a precise cut in between this area कि आपकी दोनों lipid bilayers अलग अलग हो जाए. और उसके बाद what we can do, we can have the opportunity to spray the outer sides of the plasma membrane with certain specific chemical that can make up a mold around it, and that chemical was carbon and platinum coating. ये ऐसे ही है कि अगर आप जो है मट्टी लेके कोई इसका सांचा बना लें, जिस भी शेप के जो है अराउंड आप उस मट्टी को जो है सांचा बनाएंगे, मट्टी वही शेप जो है वो अडॉप्ट कर लेती है. सो कार्बन और प्लैटिनम कोटिंग करने के बाद जब उस कार्बन प्लैटिनम कोट को ड्राई होने के बाद स्कैनिंग की गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, देन दिस वाज द पिक्चर शोन. अब इस पिक्चर में अगर आप देखिए कि जो डॉट्स हैं, दीज डॉट्स रिप्रेजेंट द outgrowths or like budding kind of thing, and they are not symmetrical. They are haphazard, they are random. जैसे यहाँ पे बहुत कम मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं. That was an evidence or idea कि this cannot be the way, this cannot be the idea कि प्रोटीन ने लिपिड बाइलेयर को टोटली कवर किया हो. rather this can be the way कि एक जगह पे प्रोटीन विजिबल है इस कोटिंग में, दूसरी जगह से प्रोटीन गायब है इस कोटिंग में, और एक ऐसा भी एरिया जहाँ पे प्रोटीन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है. दैट इज द रीजन वी give this model as a fluid mosaic model because of the two factors. Number one, lipid bilayer is fluid in nature. So because of that dynamic and fluid nature, we call it as fluid. And mosaic, that the proteins which are embedded in this plasma membrane, they are scattered in the form of a mosaic pattern. So that is the reason fluid mosaic model is most acceptable and widely most acceptable model for the plasma membrane. जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. Any question? No question, sir. Okay. Then we proceed further with the chemical composition. Chemically, when we look at the plasma membrane, we can figure out lipids, proteins, and carbohydrates. Lipids को further specifically देखा जाए तो phospholipids, sphingolipids, and cholesterol. Proteins को देखा जाए तो there are three types of proteins: integral proteins, peripheral proteins, and lipid anchor proteins. इंटीग्रल प्रोटीन को आपने पढ़ा होगा इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी, पेरिफेरल प्रोटीन को आपने पढ़ा होगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से. जो लिपिड एंकर प्रोटीन्स हैं, दे आर बेसिकली अनदर टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स टू मेक अप द ग्लाइकोप्रोटीन्स, or they are associated with lipids making up the glycolipids. Almost 90% of the carbohydrates which are part of the plasma membrane, they are associated with the protein part of the plasma membrane. When we talk about the lipids, बहुत ज़्यादा मैं इनको स्पेसिफिक डिटेल में नहीं जाऊंगा,
मेजर जो डोमिनेंस होती है लिपिड्स की, दे आर फॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, बट कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन सर्टेन केसेस. कोलेस्ट्रॉल मेक्स अप 50% of the lipid content. Just a second. Okay. So phospholipids को जब हम देखते हैं, then we can call them as amphipathic lipids because of the reason that these lipids have two ends. One end is hydrophilic, the other end is hydrophobic. So ऐसा कोई भी लिपिड जिसके दो एंड्स हों, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, उसको हम एम्फीपैथिक कैटेगरी में लेके जाते हैं. यहाँ पे हम अगर डिटेल में जाएं, फॉस्फोग्लिसराइड्स इज वन एग्जांपल. दिस इज द normal lipid bilayer with a tail and phosphate head that gives us the hydrophobicity and hydrophilicity. This is called phosphoglyceride because of the fact phosphate is present, and then this phosphate is associated with the glycerol backbone. बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे फॉस्फोग्लिसरॉल्स और ग्लिसराइड्स क्या होते हैं. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोग्लिसराइड्स डोमिनेट करते हैं, based on another chemical component of these phosphoglycerides, they are called as phosphatidylcholine, फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल अमीन, और अगर अमाइन एसिड सीरीन अटैच है तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन. दीज आर द डोमिनेंट phosphoglycerides present in plasma membrane. Sphingolipids, very few molecules present, and they are called as sphingolipids. इनकी डिटेल मौजूद है, but I don't want to go into that biochemical detail of sphingolipids. Then cholesterol is part of the plasma membrane. और जो हमने plasma membrane की fluid nature की बात की है, fluidity plasma membrane is dependent on the quantity of the cholesterol. Higher is the cholesterol content of the plasma membrane, less will be the fluidity. So यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन फंक्शंस हैं, हाउ दे कैन गेट डिस्टर्ब. मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी जो है वो कैसे डिस्टर्ब हो सकती है बिकॉज ऑफ द हाई कंटेंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज लिपिड्स इन द बाइलेयर. अगर आप ने जो है वो लाइपोसोम्स के बारे में पढ़ा हो, अगर आपने जो है वो सेल डिवीजन में जो साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ा हो, या बडिंग के बारे में पढ़ा हो, या दो सेल्स जो हैं एनिमल सेल्स उनके फ्यूजन के बारे में पढ़ा हो, या एक जनरल ऑब्जर्वेशन में दो ऑयल ड्रॉपलेट्स को आप नज़दीक लेके आएँ तो दे विल फ्यूज टू मेक अप one large oil droplet. So this is the importance of lipid bilayer, that they have the property of self-assembly to make up the liposomes. These are fluid filled vesicles present in the cell. ये हम जो है आजकल फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ करते हैं कि अगर हमने कोई ड्रग जो है टारगेट डिलीवरी करनी है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन में जाके ये ड्रग जो है उनके सेल्स में डिलीवर हो, तो उसको हम लाइपोसोम्स में पैक करके ड्रग को बॉडी में जो है इंजेक्ट कर देते हैं. उसके बाद वो मूव करती रहती है और अपने रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, या नॉट रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, वो अपने टारगेट के ऊपर पहुंच के लिपिड मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके तो ड्रग डिलीवर कर सकती है. सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड that how important is the lipid bilayer. सिर्फ लिपिड बाइलेयर की बात कर रहा हूँ, एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस आगे चल के आएंगे. देन मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स में मल्टीपल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वी कैन टॉक अबाउट. ये हमारा टॉपिक होगा गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का, उसमें जाके हम डिटेल में बात करेंगे. But here we can say that eukaryotes, they have high quantity of carbohydrates. 2 to 10% by weight carbohydrates are present, and 90% covalently linked with the protein, and few are covalently linked with the lipids. और इनकी जो डायरेक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स की, इट कैन बी टूवर्ड्स एक्सटर्नल साइड, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, और इवन इट कैन बी टूवर्ड्स द साइटोसोलिक साइड. They are present. They are associated with proteins through some specific bonding. अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखें, this red line is basically polypeptide,
This is the amino acid asparagine, and if you can see here, this is an N-acetyl glucosamine. ये स्ट्रक्चर सारा ग्लूकोज का नजर आ रहा है आपको, और यहाँ पे एक N-acetyl ग्रुप नजर आ रहा है. N is attached, amino is attached. It is going to be linked with the protein through N-glycosidic linkage. On the other hand, here we, sorry, यहाँ पे थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं. 1 second, मैं इसको erase कर लूं, then you will have a better idea. So if we look at this amino acid, so here it is linked through N group, amino group, with the protein. So this is N-acetyl glucosamine attached with the protein through N-glycosidic linkage. Whereas in this case, we have N-acetyl glucosamine attached with the amino acid through O glycosidic linkage. अगर आप इस particular group को देखें, this is O and this is N here. So the most common जो attachment है carbohydrate की with the protein, that is due to N-acetyl N linkage, whereas very few they are linked with the O glycosidic linkage. I believe कि आप लोगों को glycosidic linkage के हवाले से idea होगा. You might have studied in oligosaccharide or polysaccharide formation. फिर कार्बोहाइड्रेट्स को सामने रखते हुए यू माइट हैव थॉट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन O blood group, A blood group and B blood group. The only difference is the side chains, and side chain में जो carbohydrates attach होते हैं blood group में, that determines कौन सा blood group O होगा, कौन सा A होगा और कौन सा B होगा. This picture, this is a protein, and the protein is modified having a core of the carbohydrates. So this is common glucose, galactose, and acetyl glucosamine, galactose, and fucose. This is present here. This is present in this case. This is present in this case. In case of A antigen, we have an additional carbohydrate and acetyl glucose, and sorry, N-acetyl galactosamine here. And B group में we have galactose as part of this side chain. So this is the reason we see this A blood group and B blood group. अब reason क्या है कि किसी में O है, किसी में A है, किसी में B है? This is because of presence of certain enzymes in the individual. N-acetyl galactose amine को attach करने के लिए जो enzyme है, if this is present in your body, then your blood group is A positive. If sorry, you have A antigen present in your blood group, और अगर आपको galactose attach करने के लिए आपका enzyme body में मौजूद है, so this will be B blood group. और अगर आपके पास body में A और B जो है वो दोनों जो antigens के लिए enzyme मौजूद है, then it is going to be AB blood group. So this is the reason we have different types of blood groups. This is nothing different, only the glycosylation of the side chain on the blood group, blood in on these proteins. Any questions so far? Okay. Then we proceed further for next component, that is the proteins. तो मेजर जो फंक्शनल कंपोनेंट है जहाँ तक हम कम्युनिकेशंस की या बाकी फंक्शंस की बात करते हैं, दीज आर गोइंग टू बी दी प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो हैं दे कैन बी प्रेजेंट इफ आई बिलीव दैट दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन. कुछ प्रोटीन्स सेल के बाहर की तरफ डायरेक्ट होंगी, कुछ प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ डायरेक्टेड होंगी. So this is called as sidedness of the proteins. Some of the proteins are extracellular proteins, some of the proteins are intracellular proteins facing the cytosolic side. If we look at the arrangement of the proteins, how they are present or associated with lipid bilayer, these are intrinsic proteins, these are extrinsic or peripheral proteins, and lipid anchor proteins. If you look at this picture, you can see here, this is a protein that penetrates through the lipid bilayer, have an end in the cytoplasmic side, and have another end towards the outside of the cell.
जबकि these are called as integral or intrinsic protein. जबकि दूसरी प्रोटीन जो हैं peripheral protein, they are present only on one side of the cell, whether they are present on the cytosolic side or they are present on the external side. यहाँ पे ये प्रोटीन देख लीजिए. No doubt these proteins will be interacting with some other proteins which are intrinsic proteins or integral protein. ज़रूरी नहीं है कि इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो हमेशा से ही अपने ही जो है कंपोनेंट को यूज़ करे फॉर सर्टेन कम्युनिकेशन. देयर मे बी प्रेजेंट सम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन which are linked through this intrinsic protein. Now, these intrinsic proteins, अगली बात जो सोचने की है, it can has only one domain penetrating the plasma, the lipid bilayer, or it can have more than one domain penetrating through the or going through the lipid bilayer. और जो lipid anchor proteins हैं, you can see here this one, that this protein is anchored with the lipid. What is the difference between lipid anchor and peripheral protein is the nature of linkage. Peripheral proteins are associated with non-covalent linkage, whereas lipid anchor proteins, they are associated with covalent linkage. And if you treat your cells with certain detergents, then extrinsic proteins or peripheral proteins can get easily removed as compared to the lipid anchored proteins. Any questions so far? Otherwise, we proceed towards the functions. सर हमने जो इंट्रिंसिक की बात की थी उनका एक पार्ट सर आउटर साइड पे होता है और बाकी उनके स्ट्रक्चर का जो दूसरा पार्ट है वो इनर साइड पे होता है. ये चीज समझ नहीं आई. देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. ये देखिए, अगर मैं इसको जो है वो लिपिड बाइलेयर के तौर पे कंसिडर करूँ, तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है दैट विल बी थ्रू दिस लिपिड बाइलेयर इन सच अ वे कि इसका एक कंपोनेंट जो है वो एक्सटर्नल साइड को व्यू कर रहा होगा, दूसरा कंपोनेंट जो है वो इंटरनल साइड को व्यू कर रहा होगा. दैट मीन्स अगर इस किस्म की मैं 4 प्रोटीन्स यहाँ पे ऐड कर दूँ, तो देन दे आर गोइंग टू मेक अ चैनल. अभी हम आगे उनका फंक्शंस पढ़ेंगे, उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा. और एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो एक ही साइड के ऊपर अटैच है. इट इज़ नॉट गोइंग थ्रू द लिपिड बाइलेयर. So they are present either on one side, on outer side or inner side. अगर आप इनकी आपस में कम्युनिकेशन की बात करें तो इनकी कम्युनिकेशन जो है दैट कैन बी थ्रू दिस इंट्रिंसिक प्रोटीन ओनली. आपकी आसानी के लिए इंट्रिंसिक प्रोटीन वो होती हैं जो इनका एंड जो है एक साइटोसोल की तरफ होता है, दूसरा आउटर एनवायरनमेंट की तरफ होता है. और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है दे आर ईदर फेसिंग आउटसाइड और दे आर फेसिंग द साइटोसोलिक साइड. ओके सर, थैंक यू. ओके जी, नेक्स्ट. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और पेरिफेरल प्रोटीन. जी 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 कहिए. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन में कोई फर्क है? नहीं, एक ही बात. दोनों दो डिफरेंट नेम है. एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन एक ही प्रोटीन के दो डिफरेंट नेम है. ओके जी. So based on the functions of these membrane proteins, we can like categorize these proteins into different categories like transport proteins, receptor proteins, attachment proteins, enzymatic proteins, cell recognition proteins और intercellular junction proteins. अगर मैं transport protein की बात करूं, so you can see here this is a example of intrinsic protein which is making up a channel. चैनल का अब क्या डेफिनेशन है एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द कैरियर. चैनल में जो पैसेज है दैट इज ओपन एट बोथ दी एंड्स, दोनों एंड्स की तरफ ओपन है. जबकि कैरियर में जो है वो एक एंड ओपन है. जब कोई मटेरियल जिसने ट्रांसपोर्ट होना है वो आके बाइंड करता है, देन देयर इज गोइंग टू बी अ कन्फर्मेशन चेंज and this end will be closed and this end will be opened. So this is alternate method कि एक end open होगा तो दूसरा close होगा, दूसरा open होगा तो पहला close होगा. So this is the difference between channel and a carrier protein. Receptor protein में जो है the signal will come and bind to the external side of the cell and then the message will be communicated towards the cytoplasm
on the inner side. So these receptor proteins are basically those receptors which are target sites for the hormones which communicate the message towards the inner side of the cell. देन एंजाइमेटिक प्रोटीन, आपको याद होगा वेरी फर्स्ट लेक्चर था हमारा जिसमें हमने बात की थी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स की, उसमें मैंने जो है बात की थी जी प्रोटीन की, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की, फिर साइक्लिक केएमपी प्रोडक्शन की, और वहाँ पे एक एंजाइम की बात की थी एडिनालाइल साइक्लेज. Adenylyl cyclase was an enzyme which was anchored with the plasma membrane, and that enzyme was basically protein to perform a function. उसी तरह से कुछ और प्रोटीन्स होती हैं which are part of the plasma membrane have the active site to convert the reactants into products. So they have some enzymatic activity, therefore called as enzymatic proteins. Then cell to cell communication में जो glycoprotein glyco part है in glycoproteins का, that is basically responsible as a tag, is identified as a tag. आजकल अगर हम बात करें जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, इम्यूनिटी वर्सेस कोविड, आपका जो बॉडी में डिफेंस सेल्स हैं दे आइडेंटिफाई द वायरस फ्रॉम देयर सरफेस प्रोटीन, और वो सरफेस प्रोटीन इंटरेक्ट करती है विद दीज सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंड देन the identification is done, and then the further action is taken. So cell recognition proteins are also an example of intrinsic protein. Then there is an example of attachment protein. यहाँ से फिगर मिस हो गई है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं. These are basically meant to link up two cells which are very next to each other. आपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल पढ़ी होगी कि जो cells हैं they are arranged into tissues, and the tissues are basically having cells arranged in specific manner because these cells they are held together by certain proteins, and those proteins are called as extracellular matrix. अगर उन प्रोटीन्स की कॉम्पोजिशन देखी जाए तो दे आर मेनली दी कोलेजन प्रोटीन्स. देन इंट्रासेलुलर जंक्शन, अभी इसकी डिटेल देखेंगे कि दो एक एक दफा अटैचमेंट प्रोटीन्स वाला रिपीट कर दें. जी अटैचमेंट प्रोटीन्स बेसिकली ओके देयर इज दैट पिक्चर, वन सेकेंड. अटैचमेंट प्रोटीन में आपने जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ा हुआ है दैट सेल्स दे अरेंज देमसेल्फ टू मेक अप दी टिश्यूज. अब उन टिश्यूज में सेल और एक सेल ने दूसरे सेल के साथ अटैच होना है. हाउ इट गेट्स अटैच्ड, सो इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, this is a intracellular protein. On one side there is this network of protein, on the outer side this network of the protein, and this is the extracellular matrix. अब जब ECM या extracellular matrix को chemically evaluate करते हैं, then this is basically rich in fibrous protein and carbohydrates and as well as collagen. So that extracellular matrix is responsible to keep these individual cells attached together so that different tissues can maintain their shape, and those tissues then in subsequent arrangement can give you an organ shape of 3 dimension. Then comes up the intracellular junction protein. These are involved in attachment of the cells with one another. अब इसमें और अटैचमेंट प्रोटीन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अटैचमेंट डायरेक्ट है, प्रोटीन ऑफ वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन interacting with the protein of the other cell's plasma membrane. जबकि यहाँ attachment proteins की बात है, they are not cellular proteins, they are non-cellular proteins. जी यहाँ तक बात क्लियर है जी. Then Yes, sir. we talk about the movement of substances across the membrane. ये चीज़ें आपने डिफरेंट स्टेजेस पे पढ़ी होंगी, डिफरेंट जो है वो सब्जेक्ट्स में, लाइक फिजियोलॉजी में भी पढ़ी होंगी. सो वी विल बी हैविंग सिंपल ओवरव्यू ऑफ दिस मेथड्स. जो मूवमेंट है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल में मूवमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है. ब्रॉडली क्लासीफाई करें इसको तो दीज आर पैसिव ट्रांसपोर्ट्स एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Passive transport does not need energy. Active transport does need energy. If we talk about passive transport, this is of 3 types: diffusion, facilitated diffusion, and osmosis.
So from the area of high concentration to the area of low concentration, when we say this is the passive, this is the example of diffusion. Like this picture shows you that 1 and 2, you remove this separation from the container, then there is an a homogeneous distribution of the molecules in this container. Similarly, ये जो picture थी, that concentration was high at that corner, later on that spread across the whole given space. This is called diffusion. Facilitated diffusion में we need some other facility. Like if we look at this picture, अभी हमने बात की है channel protein की, अभी हमने बात की है carrier protein की. When transport occurs through these kind of proteins, then this is called as facilitated transport. डिफ्यूजन में अगर आप यहाँ से देखें, नथिंग इज रिक्वायर्ड, सिंपल डिफ्यूजन इज देयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से हो जाती है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए वी नीड प्रोटीन हियर. और अगर यहाँ पे देखें, देन यू कैन सी दैट हाउ द प्रोटीन इज वर्किंग फॉर द ट्रांसपोर्ट और फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सर फैसिलिटी जी. सर पीछे जब हमने देखा था वो कैरियर प्रोटीन्स में से जब मॉलिक्यूल निकल रहा था तो वहां पे एटीपी यूज हो रही थी. तो सर हम जब पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें तो एनर्जी यूज ही नहीं होती, तो फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर के थ्रू क्यों हो रही है? नहीं, उसमें दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं. एक जो कैरियर है, कैरियर इज पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब ये इस फंक्शन किस तरह से कर रहा है, व्हाट मटेरियल इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रही है, टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रही है. जो एग्जांपल आपने ये देखी थी, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, जो कि होती है सोडियम पोटेशियम पंप की, आगे चल के एग्जांपल आएगी. और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, दिस इज एग्जांपल the channel protein or carrier protein, then you can see from the area of higher concentration to the area of lower concentration, and same is here from the area of higher concentration to the area of lower concentration. So don't focus on the ATP, because वो एक अलग स्टोरी है, उसमें एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है. जो कैरियर हैं, दे आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन बोथ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, वेदर दिस इज एक्टिव और दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है जी. सो मतलब मींस के वो एनर्जी के साथ भी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और उसके बगैर भी करता है. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. yes, it depends upon situation, it depends upon the cargo, जो भी material transport होना है, and it depends on the concentration gradient. अगर तो against the gradient जाएगा, that means from the area of low concentration to higher concentration जाएगा, then energy चाहिए, otherwise energy नहीं चाहिए. ओके सर, थैंक यू. Okay, so ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में वाटर और डिफ्यूजन में गैस, क्या ये ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होते हैं या मतलब कोई और है इसमें? वेट कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे ऑस्मोसिस आएगी तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आता हूँ, फिर बात करता हूँ. अच्छा जी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो है, वी यूज 3 डिफरेंट टर्म्स बेस्ड ऑन हाउ इट इज हैपनिंग. एक है जी को ट्रांसपोर्ट या काउंटर ट्रांसपोर्ट. लाइक अगर इस पिक्चर को देखें, सेम कैरियर is transporting 2 different materials in opposite direction at the same time. So this is counter transport, और इसमें भी एनर्जी यूज नहीं हो रही, बिकॉज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट हो रही है. और ये पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से मूवमेंट हो रही है, इसमें चूंकि 2 वे मूवमेंट है, दोनों डायरेक्शंस में है, तो इस पोर्ट को हम कहते हैं एंटी पोर्ट. दूसरे नंबर पे आ जाती है को ट्रांसपोर्ट. अगर आप इस पिक्चर को देखें, थ्रू वन चैनल, ion channel, that is sodium, it is facilitating the transport of glucose as well. और दोनों की जो movement है, that is in one direction, like you can see here sodium and glucose, and they are in the cell. So this is called as co-transport. अब यहाँ पे चूंकि direction of movement is same, so we call this particular port or this particular entry as sim port. Sim means similar. और उसके बाद तीसरी जो है चैनल, वो है गेटेड चैनल. लाइक हियर यू कैन सी सोडियम चैनल्स, दे आर गेटेड चैनल.
the gate will be opened, then the sodium can go in. और ये opening के लिए you need a certain ligand which binds with this particular channel, will open this gate, and then sodium can move in. So this is how the facilitated diffusion occurs. Then comes the osmosis. जैसे कि आपने क्वेश्चन किया, yes you are right, यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन सेम है बट फोकस डिफरेंट है. अगर सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशन में जब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगी अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे. अदरवाइज अब आपने जो गैस का वर्ड यूज़ किया है, दिस इज़ नॉट ऑलवेज गैस फॉर डिफ्यूजन. आप एक पानी के ग्लास में अगर जो है वो इंक डालते हैं, देन दैट इंक स्प्रेड्स थ्रू आउट द लिक्विड एज वेल. बट वहाँ पे ना तो आपने फोकस किया कि इंक स्प्रेड कर रही है या वाटर जो है वो मूव कर रहा है. सो दैट इज़ ऑल्सो डिफ्यूजन. अगर एक कलर ड्रॉपलेट विद इन वाटर spreads throughout water, that is also called as diffusion. जो ऑस्मोसिस का फ़र्क है ना, उसमें एक कंडीशन तो ज़हन में रखिए, whenever you will talk about osmosis you will talk about membrane, movement across the membrane. और अब मूवमेंट किस चीज़ की, अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखें, दिस साइड हैज़ लो solute high solvent, this side has high solvent and low solvent and high solute. अब यहाँ पे जब हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे, वी विल फोकस with reference to the water molecule movement. When water moves from the area of high concentration to the area of low concentration. अब जब मैं बात कर रहा हूँ ना area of high concentration to the area of low concentration, that means we are talking about the quantity of water in the solution. अगर नॉर्मल टर्म में सोचा जाए, वाटर इज अ सॉल्वेंट और कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूट की डिटरमिन की जाती है. जैसे सोडियम क्लोराइड है 5 ग्राम्स पर मिलीलीटर ऑफ वाटर. जब हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर वाटर कंटेंट टू द एरिया ऑफ लोअर वाटर कंटेंट. इन सॉल्यूशंस को अगर मैं नाम देना चाहूँ, दिस इज गोइंग टू बी dilute solution, this is going to be concentrated solution, or hypertonic, hypotonic solutions. इसके ऊपर बाद में आते हैं. Okay, so through this membrane, water moves from the area of higher water content to the area of lower water content. Ultimately ये movement उस वक्त तक जारी रहती है जब तक water quantity as per या concentration जो है दोनों तरफ बराबर ना हो जाए. This is called as osmosis. ठीक, एक टर्म आप पढ़ते हैं हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस. एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि हाइपोटोनिक या टोनिसिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं वन सॉल्यूशन विद रेफरेंस टू द सेकंड सॉल्यूशन. लाइक इन दिस पर्टिकुलर बीकर अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो है आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड इनसाइड एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, one of them will be hypotonic solution, the other one will be hypertonic, or in other words one of them will be dilute, the other one will be concentrated solution. अब इसी पर्सपेक्टिव को जब हम इस एक्सपेरिमेंटल ट्यूब में लेके आते हैं तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी आता है. अब concentrated solution are more are having more osmotic pressure, और dilute solutions are having more osmotic pressure. इसके बारे में आपका क्या जो है वो अंडरस्टैंडिंग है? जी, the question is, we have concentrated solutions and we have dilute solutions. Which one of these solutions will have higher osmotic pressure? और in other words पहले बात कर लेते हैं osmotic pressure क्या होता है. Let's come to this beaker. एक्सक्यूज मी सर, जी, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सोल्यूट पोटेंशियल नहीं होता? जिनका ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा होता है उनका सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होता है कि वो नहीं? जी समहाउ ठीक है. मैं अब एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो हमारा बीकर का है इसको देखें, और इसमें हमारे पास एक ये साइड है जिसको मैं
A side और दूसरी साइड है B side. My question is, which side has the higher osmotic pressure as compared to the other side? A side का osmotic pressure ज़्यादा होगा या B side का osmotic pressure ज़्यादा होगा? Yes, absolutely. B side का osmotic pressure होगा और osmotic pressure किस वजह से होता है? That you need to understand that the solute particles, they are present in this solution at higher quantity. When water tries to pass through this membrane, water can cross this membrane, but these solute particles goes, they hit the membrane and they are not allowed to move through the membrane. They bounce back in the same side. So ultimately जिस साइड के ऊपर solute ज़्यादा होगा उस साइड के ऊपर membrane के ऊपर जो है वो pressure ज़्यादा होगा. So we call them that pressure as osmotic pressure. So the concentrated solutions, they are going to have higher osmotic pressure as compared to dilute जो है solutions. इसी जो है वो कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए हमारी जो फिजियोलॉजिकल स्टेट्स हैं उसमें तीन किस्म की सिचुएशंस पाई जाती हैं: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक. व्हेन वी टॉक अबाउट आइसोटोनिक सॉल्यूशंस लाइक हियर, देन कीप इन माइंड कि हम हमेशा से ये नहीं कहेंगे कि वाटर मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर क्वांटिटी टू द एरिया ऑफ लोअर क्वांटिटी. लाइक इन दिस यू शेप एक्सपेरिमेंट, इस लेफ्ट आर्म में जो है वो वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, हायर इज द वाटर, सो वाटर स्टार्ट्स मूविंग थ्रू दिस मेम्ब्रेन टुवर्ड्स दिस एरिया. डू यू थिंक कि यहाँ से लेस वाटर एरिया से हमारे पास इस हाई वाटर एरिया में मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की? No, sir. So your answer is wrong. Yes, the water comes from that side as well, but the net difference is visible when we see the rise in column, because this membrane is permeable for water molecule. अगर लेफ्ट साइड से जो है राइट साइड के ऊपर 10 वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड के ऊपर एक वाटर मॉलिक्यूल आ रहा हो. That makes the net increase in the water content on this side 9 molecules. Because आप ये नहीं कह सकते कि एक साइड के लिए जो है वो मेम्ब्रेन जो है वाटर परमिएबल है और दूसरी साइड वाटर के लिए परमिएबिलिटी नहीं है. So just correct it. Water moves in both the directions, but the net change is visible because of the more water movements from the area of higher water content to the area of lower water content. So you can see this picture here, कि water is going out of the cell, water is coming inside the cell. So movement will occur in both the direction. जब हम hypertonic solutions की तरफ आते हैं, that means कि solute concentration बाहर ज़्यादा है, water quantity बाहर कम है, सेल के अंदर वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है, तो सेल में से जो है वो वाटर बाहर भी आ रहा है और माइनर क्वांटिटी में सेल में से वाटर अंदर भी जा रहा है, लेकिन नेट चेंज जो है more water goes out of the cell, therefore cell shrinkage occurs. And opposite happens here when these hypertonic conditions के बाहर जो है एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में हमारे पास वाटर कंटेंट ज़्यादा है और इंटरनल एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट कम है, then movement is towards inside of the cell and cell swells up. So this is the osmosis and its role at the physiological level, at the cellular level. और बहुत से ऐसे जो cellular processes आप पढ़ेंगे like excretion हो गया या बाकी जहाँ पे water content involved है, वहाँ पे ये tonicity plays its role. Any question? सर मुझे ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं क्लियर हुआ. Osmotic potential या osmotic pressure? सर वही ऑस्मोटिक प्रेशर, वो वॉइस का इशू आ रहा था तो वो वाली नई लाइन समझ आई. चलें मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ. ये एक मेम्ब्रेन है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल इसको हिट करता है, लेकिन इट इज़ परमेबल, सेमी परमेबल फॉर वाटर मॉलिक्यूल वाटर प्रोसेस. ऑन द अदर हैंड जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है, दैट इज attached with the, that is bound with the water molecules. When this solute particle goes and hit the membrane, now it cannot cross the membrane because of its size, so ultimately it bounce back in the same side. जितने solute particles ज़्यादा होंगे membrane के उस side के ऊपर ज़्यादा pressure होगा, so that is
going to create the osmotic pressure. So this is what I said. अगर particles कम हैं तो ultimately उस side के ऊपर जो है वो pressure कम होगा. Okay, sir. Thank you. Okay, ji, this was all about transport. Now we सर talk. सर जी जी बोले. हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हाइपर ऑस्मोटिक कह सकते हैं. Hypotonic को हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन. हाइपर ऑस्मोटिक सोल्यूशन बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो पिक्चर मैंने दिखाई है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल जब सेल मेम्ब्रेन को हिट कर रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं. बिल्कुल आप कह सकते हैं. ओके सर. Okay, ji, then comes the active transport where the movement is against the concentration gradient and it involves the energy requirement provided by the ATP. Broadly speaking, we have two types, exocytosis and endocytosis, part of the living cells. अब ये पिक्चर जो है ये तीनों मेथड्स को जो हम पढ़ चुके हैं उनको कंपेयर करिए. डिफ्यूजन, then facilitated diffusion, and now you can see here that movement against the concentration gradient and at the expense of energy derived from ATP. एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के हवाले से जो है वो बात अगर करें उससे पहले जो है मैं जो इसकी एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर communication in the body. The example is of sodium and potassium pump. You can see this pump or this carrier protein which is present in the plasma membrane. It will be involved in transporting 3 sodium ions out of the cell, and in reverse it is going to bring 2 potassium ions into the cell so that the membrane potential can be established regardless of the concentration gradient. So ultimately यहाँ पे energy की requirement जो है that is met by ATP, and the membrane potential is maintained at the expense of energy ATP. When we talk about exocytosis, बहुत से ऐसे सेलुलर प्रोसेसेस हैं जिनका एंड प्रोडक्ट जो है दैट हैज़ टू गो आउट ऑफ द सेल. नाउ यू कैन सी हियर this animation shows that how the vacuoles are coming and they are going to meet at the fuse at the plasma membrane. बहुत से जो हैं पॉलीसेक्राइड्स जो हैं या क्या कहते हैं waste materials, they are being thrown out of the cell by this method. अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि प्रोटीन भी ऐसे ही सेक्रीट की जाती है. एक होता है प्रोसेस एक्सक्रीशन का, एक होता है प्रोसेस सेक्रीशन का. एक्सक्रीशन में वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड, सेक्रीशन में जो हमारे बेनिफिशियल प्रोटीन्स हैं दे आर रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेशन ताकि वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जा सके जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, टारगेट साइट्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट की जा सके. सो एक्सोसाइटोसिस इज गोइंग टू नीड एनर्जी फ्रॉम ATP. When we come to phagocytosis, then it can be of endocytosis. It can be further subdivided into 3 types, that is phagocytosis, pinocytosis and receptor mediated. बहुत बेसिक सी ही बात करूंगा इसके ऊपर. फैगोसाइटोसिस को सेलुलर ईटिंग कहते हैं, पिनोसाइटोसिस को सेलुलर ड्रिंकिंग कहते हैं. यू कैन सी दिस पिक्चर and you can compare that how the solid particles are taken in, how the liquid particles are taken in, and how the endocytosis occurs due to the receptor mediation. अगर इस endocytosis को check करें तो यहाँ पे you don't see any kind of receptors involved, but in this particular case you can see that receptors are there, and then the ligands bind to these receptors. That part of the particular region of the plasma membrane is lined with the protein which is called as clathrin. और इसके अलावा अगर मैं डिस्क्रिमिनेट करूं एंडोसाइटोसिस को रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से, तो एंडोसाइटोसिस कैन अकर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, whereas receptor mediated endocytosis will be limited to those areas of the plasma membrane where the receptors are present. इसकी further explanation आपको मिलेगी इस पिक्चर से, that you can see receptors are there. और अगर मैं इसके ऊपर आऊँ कोलेस्ट्रॉल अपटेक के ऊपर,
You can see here LDL complex with apoprotein here. Cholesterol is binding with the apoprotein. This apoprotein is going to come and going to bind with these receptors. Soon this ligand binds with the receptor, then there comes the protein क्लैथरीन. अगर आप ये देखें रेड कलर में लाइनिंग है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो पहले नहीं थी, लेकिन जैसे ही रिसेप्टर और लिगेंड की अटैचमेंट हुई, दिस प्रोटीन हैज अरेंज्ड इटसेल्फ beneath the plasma membrane, and then there is invagination and pit formation occurred, which is called as coated pit. And ultimately, because of these clathrins, we see that the endocytosis is completed and the material has been endocytosed. So normal endocytosis में और receptor mediated endocytosis में ये फर्क है. So this was about active transport. The other function which these membranes, these proteins are going to perform at the cell and tissue level, they are at the cellular junction level of three types: tight junctions, desmosomes and gap junctions. अगर आप इस पूरे epithelial layer को देखें, this is the epithelial layer in the intestine, and as you know, intestine, it has the basal membrane on one side, microvilli on the other side. So these cells have specific arrangements, specific proteins which make them aligned side by side. If we look at this particular point and enlarge it here, we can see that there are these proteins. These are making up the interlocking junctions. इनको आप इसी तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि दो कपड़े के पीस जो हैं अगर उनको सिलाई किया जाए, so this is that kind of stitching over here in some parts of the cell with the help of certain protein, and these junctions are called as tight junctions. Then there comes the desmosomes. If you come in the center of the cell, the plasma membranes, they have on the inner side some proteins, and then they have some space, intracellular space, and then they have some linker proteins. ये ऐसे ही है जैसे एक सेल में कुछ जो हैं वो एडॉप्टर्स हैं, दूसरे सेल में जो हैं कुछ एडॉप्टर्स हैं, ये आपस में आके जो फिक्स हो रहे हैं एक दूसरे के दौरान. सो दीज आर द लिंकर प्रोटीन्स. नॉर्मली इनको कैडरिन कहा जाता है, और ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम डेस्मोसोम्स कहते हैं. फिर जब हम बेसल साइड के ऊपर आते हैं, यू कैन सी ओवर हियर that these are the gap junctions. Normally हम कहते हैं कि plasma membrane does not have any like opening, लेकिन जब tissue formation में होते हैं, so there are certain proteins which make up the channels that connect the two types of cells, two adjacent cells. अगर आप यहाँ पे देखें, the cells are connected with each other and their cytoplasms are in continuity, in connectivity with each other. These kind of proteins are called as gap junctions, and they allow the material movement in the adjacent cells. So this is all about plasma membrane, its structure and its function along with the proteins. If you have any question, you may please ask.